Hey everyone, welcome to online classes of 𝐊𝐚𝐥𝐲𝐢𝐧𝐞. Today I will teach you the first chapter of science of class 6th, that is what is food and where does it come from. Food क्या है and food हमें कहाँ से मिलता है. So before getting into the chapter, let's discuss some of the new terms. नया शब्द जो आप एनकाउंटर होगे दिस चैप्टर में. सो द न्यू वर्ड्स दैट यू विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट आर द न्यू टर्म्स यू विल गेट एनकाउंटर इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज इंग्रेडिएंट्स. सो बच्चों, व्हाट इज और व्हाट डू यू मीन बाय इंग्रेडिएंट्स? सो इंग्रेडिएंट्स लाइक लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल. सपोज आप कोई फूड डिश बना रहे हो, लाइक कोई करी बना रहे हो, लाइक चिकन करी और समथिंग. सो उसमें जो सारे चीजें ऐड किया जाता है दैट आर नोन एज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट डिश. सो इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फूड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स, सिंपली इंग्रेडिएंट्स मीन्स द एलिमेंट्स दैट आर एडेड इनटू दैट फूड डिश. कोई खाना बना रहे हो तो उस खाने में जो सारे इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, ऐड किया जाता है, वेदर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस और लाइक द मेन एलिमेंट ऑफ द फूड डिश, लाइक चिकन करी में अगर चिकन हो, उसी तरह. सो इंग्रेडिएंट्स मीन्स द एलिमेंट्स दैट आर एडेड इनटू द फूड डिश. देन एडिबल. व्हाट इज एडिबल? सो एडिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी ईटेन. जो चीज तुम खा सकते हो, जो चीज खाने लायक है, जो चीज में कुछ लाइक न्यूट्रिशन है, प्रॉपरली तुम्हारे हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल है, एंड दैट कैन बी ईटेन, इज नोन एज एडिबल. सो सिंपली एडिबल मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी ईटेन. देन नेक्टर. नेक्टर इज ए कंप्लीट न्यू टर्म फॉर यू. सो नेक्टर मीन्स देखो, पहले तुम नेक्टर means the sweet juice of the flower. So let's consider एक बी जब गार्डन में घूमकर डिफरेंट फ्लावर्स में से एक जूस कलेक्ट करके अपने बी हिव में रखता है. जो स्वीट वो कलेक्ट करता है, जो स्वीट जूस वो कलेक्ट करता है लिटिल अमाउंट का, उसको कहा जाता है नेक्टर. सो इट इज द बिफोर फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हनी. सो हनी प्रिपरेशन के लिए हनी बीज कलेक्ट करते हैं ये नेक्टर फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स एंड दे कीप इट इन देयर बी हिव. सो नेक्टर इज द स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स. देन स्प्राउट्स. सो स्प्राउट्स देखो, लाइक एनी जर्मिनेटेड सीड को स्प्राउट कहा जाता है. ठीक है, कोई भी सीड अगर वेट हो गया एंड भीग गया तो उसे हम रख देंगे बाहर, या फिर एक भीगा हुआ कपड़े में बांध कर रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें से रूट्स निकल आ जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाता है. सो सच सीड्स आर कॉल्ड एज स्प्राउट्स. देन हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड स्कैवेंजर्स. सो these are the different types of animals on the basis of their eating habits. So खाने के अनुसार don't eat the same kind of food, right? So on the basis of their eating habits, जो different तरह के animals होते हैं, they are called as has been divided into these three types: herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. Mostly these three: herbivores, carnivores and omnivores. So first, what are herbivores? So herbivores are the organisms or animals, those who eat ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. कोई भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म अगर ओनली प्लांट प्रोडक्ट को खाता है तो उस तरह के एनिमल को हम क्या कहेंगे? हर्बीवर्स कहेंगे. और समझ में आया? हर्बीवर्स द प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग एनिमल्स. जैसे कि काव हो, बुफालो हो. एक काव क्या खाता है? घास खाता है, लीव्स खाता है, वेजिटेबल का पिल्स खाता है. सो ऑल प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है या फिर वेजिटेबल्स खाता है. सो दैट आर नोन एज हर्बीवर्स. देन कार्निवर्स. सो कार्निवर्स आर द एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोज हु ईट
to other animals like the organisms जो कि हम हिंदी में कहेंगे तो वो मांसाहारी होते हैं या फिर दूसरी जीवित एनिमल को मारकर खाते हैं. लेट्स कंसिडर फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, सो वुल्फ, ये सब कार्निवर्स में जाएंगे. देन omnivores are the group of organisms or animals that eat both plant products as well as animal products. Animal products भी खाता होगा and plant product भी खाता है, तो वो हो गया omnivores. Scavengers are the kind of animals or they eat only the flesh of dead animals like कोई मुर्दार पड़ा है कोई एनिमल का या फिर मर के पड़ा है तो उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं, उनको खाते हैं, उनका फ्लेश को खाते हैं. फॉर एग्जांपल vulture इज ए scavenger. So scavengers are the animals or birds or animals. They eat the flesh of other animals. So these are the new terms you will get in this chapter: ingredients, edible, nectar, sprouts, herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. Hope you understood all these terms. अगर किसी को डाउट है तो I am always live these days, so just write me in the comment box. I will explain to you on that moment. Okay, so now let's come to the chapter. So chapter name is food and where does it come from. फूड क्या है, खाना क्या है एंड कहां से हमें ये मिलता है. तो इसको जानने के लिए हमें पहले नॉलेज होना चाहिए कि ये फूड क्या है. व्हाट इज फूड? व्हाट इज फूड? सो देखो, इट्स ए वेरी कॉमन स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, हिंदी में सपोज बोलना है, जो हम खा सकते हैं, जो हमारे खाने लायक है, दैट इज फूड. सो सिंपली let's define it properly. So food is anything that is good for our health and that can be eaten and that provides us some nutrients that are needed for our body to growth or development. So let's make a simple definition for it. So जैसे कि तुम क्यों खाते, क्यों हम खाना क्यों खाते हैं? हमें भूख लगता है. सो भूख लगने के टाइम पर तो हम कुछ भी नहीं खा सकते ना. हम क्या लाइक प्लास्टिक खा जाते हैं? नहीं. हम जो खा सकते हैं खाने लायक चीज है जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें कुछ पौष्टिक द्रव्य है, उसको ही खाते हैं. हाँ कि नहीं? दाल, चावल, चपाती एक्सेट्रा. सो these are food. Simply the different items or dishes that we eat for our body needs, for the growth of our body, is known as food. Okay, then what are the various types of foods? अभी मैं पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर रहा था. various types of foods like mostly the foods has been divided into two categories like vegetarian foods and non-vegetarian foods. So vegetarian foods are the plant products. जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स है इन सबको वेजिटेरियन फूड्स कहा जाएगा. एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो रहता है हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स. सो एनिमल प्रोडक्ट्स में जो रहता है दैट आर नॉन वेजिटेरियन. सो प्लांट प्रोडक्ट में जैसे कि रहता है हमारा लाइक प्लांट प्रोडक्ट में क्या लाइक एनी प्लांट मटेरियल लाइक राइस हो, दाल, राइस दाल जो कि स्टेपल फूड है, देन व्हीट, देन मेज. देयर आर मेनी थिंग्स जो भी प्लांट से हमें मिलता है, दैट आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स. एंड एनिमल प्रोडक्ट में क्या जाता है? एग, चिकन, then meat of goat or any other animal that people eat, then milk also,
animal product because milk cow से हमें मिलता है, that is an animal. Milk, curd, ghee. So these are all animal products. Okay, so these are the basic different types of plant products and animal products we have. Then let's come to yeah, third question was what are different animal products and plant products. So animal products and plant products raha. Then what are the different edible parts of a plant? So edible parts of a plant, कोई भी प्लांट को देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज. सो लाइक या कोरिएंडर, दैट इज आल्सो ए प्लांट, बट कोरिएंडर का तो सब कुछ हम खा जाते हैं, है नहीं. सो देयर आर सम एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. सम प्लांट्स लीफ वी ईट, सम प्लांट्स सीड वी ईट, सम प्लांट्स द स्टेम पर्सन वी ईट. सो yeah, in some plants the seed, for example, most of the oils, all oils or most of the oils are the excretion of the seeds that are excreted, that are formed from the seeds. Seeds को फैक्ट्रीज में लेकर या फिर पेस्ट कर या फिर उसको एक प्रोसेस में लेकर उसमें से ऑयल निकाल कर हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. सो मोस्ट ऑफ दीज आर द oils of the seeds. Then what are different types of animals on the basis of their eating habits? ये भी already मैं discuss कर चुका हूँ. On the basis of the eating habits, these are the 3 or 4 different types of animals: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. Okay. Then what are nutrients? This is an important question. What are nutrients? So nutrients means there are like carbohydrates are there, proteins are there, minerals are there. These are all nutrients. So simply nutrients का definition अगर हम explain करेंगे, the elements of the food that are dissolved in our body for the growth and development of our body are known as nutrients. जो भी चीज हमारे बॉडी में डिजर्व होता है हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दैट आर ऑल नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो दिस वाज ऑल एंड इन द नेक्स्ट clip we'll discuss the exercise of this chapter, so stay tuned.